Hello friends, a very warm welcome to Ansarkari, and in the continuing series of discussions and debates where we are trying to understand and trying to develop a kind of thinking which is very very important for writing mains examination answers and also for facing the personality test in the end. Here are the ideas which are to be derived from the understanding of the newspaper, not directly picking up the newspaper itself. For example, Dr. Babasaheb Ambedkar, he stood for one constitution. Now, this is one of the interpretation when we say that Chief Justice of India, B.R. Gavai, he is saying that Supreme Court upheld the abrogation of Article 370, which gave the special status to Jammu and Kashmir, so that country is governed by only one constitution. Now, this is one of the ways to put it. So, this is one of the ways, this is one of the interpretations, so we can definitely write it in the examination. But then, we have also to write that how in that time, when special provision was made or temporary provision was made, what were those circumstances? So that is why uh, you know constitution provides for uh, you know uh, a kind of a balanced federal structure. It is not providing for excessive federalism, and in the time of crisis and in times of disturbance, the country must remain one, the country must remain great, the country must remain integral under all circumstances. So that is why he is actually trying to narrate and trying to interpret that why Article 32 in the Constitution, which is called as the right to remedies in the case of violation of fundamental rights, which can be directly raised before the Supreme Court, and the roots of it lies in the speeches and also the intention of Dr. Ambedkar, who insisted on ensuring socio-economic equality along with political equality or political rights. So the Constitution's core values are to be practiced, they are to be spread, they are to be they are to be celebrated. Actually, that is why they all were speaking at a point when they were at this event where the statue of Dr. Ambedkar and the murals are there, which are depicting the key values of preamble and miniature models of Rashtrapati Bhavan, Parliament House, Supreme Court, Ashoka Pillar, and so forth. So we have to understand and we have to respect it rather than questioning it first. Organic products of Uttarakhand. So organic products of Uttarakhand must be linked with the idea that how organic movement in India, which is very much linked with the organic food, organic agriculture, and for that we need to see the role of state of Sikkim. So I would ask you as an assignment that go and check and see what kind of achievements Sikkim had taken as far as organic economy is concerned. And then you can think about Uttarakhand, about the Viksit Bharat, Sashakt Uttarakhand. They are talking House of Himalayas, providing the global market to local products. But that is one point. But we should be more concerned, more worried about ecology, more worried about sustainable development, more worried about that the growth must be aligned with the ecological development. So this is also what this is not directly put up here. So House of Himalayas is a kind of a brand that they want to do it with one district, two product, not even one product. So we can pick up some mainstay points, for example, authenticity, community, open sourcing, ethical priority, and then this is very very important for PT, geographical indicator craft products. For example, Bhotia Dan of Uttarakhand, traditional hand worn carpet is very important for prelims, and you have Bichu Butti. So nettle fiber prelims में ये भी question आ चुका है, nettle plant. They will not give you the word Uttarakhand along with that. Then Rangwali Pichora, so they will not ask Kumaon नहीं आएगा उसके साथ. Tamta products, Tamta is also a community. Then Ipan, natural folk art form, creation of intricate organic patterns on using rice paste and chalk, usually seen on the floors, and Ringal craft. So this is very very important, and there is a whole list given. Almora, like for example, Bal Mithai, Tweed, Bhageshwar, copper products, tea products. So I think we must write it down
we must try to have certain kind of understanding so that examination में हम इसका यूज कर सकें. Demolitions. Now urban governance में demolitions का क्या रोल है? अगर मैं बात करूं अर्बन गवर्नेंस की जो ऑब्जेक्टिव हैं, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव इज dignified living for all sections of society. So the major demolitions which have taken place, there are 675 JJ clusters across capital, a majority of which are on the land owned by various Delhi and union government agencies. A slum dweller who is eligible for rehabilitation has to pay a sum ranging from 1.2 lakh to 1.4 lakh for a 25 square meter house, as well as rupees 30,000 as maintenance cost for 5 years. And वो चीज हो सकती है, जैसे मद्रासी कैंप का एग्जांपल है, तैमूर नगर का है, जेलरवाला बाग है. सो दिल्ली अर्बन शेल्टर जो बोर्ड है, DU SIB which functions in Delhi government, इसका काम है रिहेबिलिटेशन का. बट द क्वेश्चन अराउंड अराइजेस लाइक धारावी प्रोजेक्ट, जैसे वी टॉक अबाउट दैट रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट. तो ये बात नहीं है कौन कहाँ रह रहा है और क्या होगा और क्या नहीं है. See, the question is that it is not about the politics, it is about the rehabilitation, it is about dignified living, it is about due process of law. So if it is what I should say, like taken through even judiciary, if all the political parties are also going beyond vested interest, then we can say there can be a kind of a there can be a kind of a long-term process, because there is no point in living in a very shabby conditions. So DDA का है, कैपेसिटी है 3,000 से लेकर, फिर अशोक विहार है, एंड DUSIB जैसा मैंने बोला उसका एग्जाम्पल भी है. सो द क्वेश्चन इज इन एग्जाम यू मस्ट राइट अबाउट, सिर्फ ये एक DUSIB की बात नहीं है, मुंबई है, चेन्नई है, कोलकाता है, and then how we have to prevent slum development in tier 2 tier 3 cities. Extension of villages nahi hai urban cities. In Gurgaon also we have to speak about, and then you have to speak same thing about Pune, same thing about Hyderabad, same thing about Noida. So slum rehabilitation policy must be based on certain principles, constitutional principles, economic principles, political rights, and there must be certain kind of political sagacity and leadership. और उसको फिर आप करेंगे, नहीं तो नहीं हो पाएगा, नहीं तो कैसे होगा. Legal, there must be in a legal way. And Delhi master plan, Mumbai master plan, Kolkata master plan, Chennai master plan, they must also speak about it. EWS sections के लिए है, लो इनकम ग्रुप का है, प्रधानमंत्री का भी चल रहा है, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना की बात है. So there must be different models according to size and location, and there must be enough houses. And आप जो है या फिर स्लम डवेलर्स को टेन्योर राइट दे दीजिए कुछ टाइम के लिए, दे के हैव एन एश्योरेंस कि उनके हाउसेज जो है डिमोलिश नहीं होंगे. सो रीब्लॉकिंग हो सकती है, रीअरेंजिंग ऑफ होम्स हो सकता है, ज्यादा डिफरेंट पोजीशन पे ले जा सकते हैं, जैसे प्रधानमंत्री मैंने आवास योजना की बात की. तो इस पर्सपेक्टिव से हमें देखना है, क्योंकि 15% of Delhi's population if live in slums, then we have to understand that the cities of the cities of Delhi जो प्रोजेक्ट है, वो स्लम जो है वो अगर वो भी ज्यादा 34, 35, 40% तक अगर आप स्लम में रह रहे हो तो सिटी का विकास नहीं हो सकता. तो दे आर ऑल्सो ह्यूमन बीइंग्स, दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ लाइफ. सो दैट इज व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव. सेकुलर सोशलिस्ट जो वर्ड है प्रियम्बल में, सैक्रिलेज है, फर्स्टिंग वूंड है, ऐसा कहना है वाइस प्रेसिडेंट साहब का. सो सेकुलरिज्म एंड सोशलिज्म आर वेस्टर्न कॉन्सेप्ट्स, प्रियम्बल रिफ्लेक्ट्स द सेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. लेकिन क्वेश्चन वही उठता है कि हमारे संविधान का क्या कहना है. इट इज ऑलवेज सेड दे preamble is the key to the mind of the constitution makers. लेकिन क्या, मैं आपसे क्वेश्चन यही पूछता हूँ, आपको 2 लाइन इस पे लिखनी है कि भाई why do we keep picking up such debates which are actually non-essential for making India a Viksit Bharat or an inclusive Bharat? It is not such an important thing, because preamble में अगर ये word है भी, then otherwise also our constitution including fundamental rights, article right, life and liberty है, या फिर secularism is part of the basic structure of the constitution. तो फिर अगर वो preamble में है भी, so how it is festering wound है या फिर कैसे वो है, तो हमें इस चीज को ज्यादा वो नहीं करना है, because our constitution is supreme, and
judiciary has always taken a very, very great and an amazing and magnanimous stand. So we can say that that our political leadership must be more positive, must be more must be more forthright. जिस समय ये वर्ड दिया गया था, there were different political conditions. Prime Minister Gandhi was worrying that Jansangh and right wing leaders, they are having their more presence and their popularity is increasing, so she went on to insert this. Similarly, because she had abolished privacy, private purses, and she had nationalized banking at that time, that is why she went on to bring socialist word into it. Otherwise हमारा तो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन सोशलिस्ट आइडियाज के बेंच पे है। तो ऐसा नहीं है, काफी सारी चीजें जनता पार्टी गवर्नमेंट ने 44th अमेंडमेंट से रिवर्स कर दिया था, तो ये तो नहीं किया था। तो इसीलिए बेरापुरी केस है, मिनर्वा मिल्स है, किशन भारती है, एंड प्रीलिम्स के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका अंडरस्टैंडिंग। सो वी हैव टू सी, हम पॉलिटी सीरीज में हम अलग से भी देखेंगे, एंड दैट इज वाई। तो कांग्रेस केम टू पावर अगेन, बट देन इट नेवर रीगेन्ड इट्स अथॉरिटी। सो वही बात है, the emergency was emergency was definitely a mistake as said by the Congress, and Congress never tried to capture institutional framework, which is happening now. So this is another viewpoint. So कैसे इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क अभी कैप्चर हो रहा है, जैसे आप कहोगे सेडिशन है, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, एंड देन अर्बन नक्सल, जो भी आप बोलोगे तो अर्बन नक्सल की कैटेगरी में आ जाएगा, या हिंदू नेशनलिज्म की बात है। नेशनलिज्म तो होना चाहिए, एक बड़ा नेशनलिज्म का पर्सपेक्टिव है, एक हिंदू नेशनलिज्म का पर्सपेक्टिव है। सो दैट इज हाउ द पर्सपेक्टिव इज, एंड देन here is an example given how कमलनाथ कैंपेनिंग विद इंदिरा गांधी इन 1980 लोकसभा पोल्स। तो भाई भारत है, समय आता है, एंड चीजें हमें समझनी है। और जो एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से, हम जो एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से कर रहे हैं, उस पर्सपेक्टिव से हमें उस चीज को देखना है। जैसे उन्होंने यहाँ बोला कि संजय गांधी वॉज अ पर्सन हु वर्कड 18 hours a day, he was a fanatically nationalist, and people sometimes misunderstood him, so that's fine. So 21 month लॉन्ग इमरजेंसी थी, लेकिन उसके डिबेट से हम फ्यूचर के लिए वो निकालना चाहिए जो हमें जरूरी है। ओके, एंड बात ये नहीं है कि आपके पर्सनल व्यूज क्या है, बात ये है कि हमें कैसे अपने आप को आगे बढ़ा के चीज को देखना है। तो राइट, फॉर एग्जांपल ही इज टॉकिंग अबाउट कॉमी कपूर्स बुक इंडियन एक्सप्रेस की जो बात है, इंडियन एक्सप्रेस के बारे में जो लिखा, एंड इंदिरा गांधी वाज गोइंग टू अनाउंस जनरल इलेक्शन 1977। सो वही बात है कि मिसेस गांधी वाज ऑलवेज फॉर कॉलिंग इलेक्शंस, एंड वो चाहती थी किसी टोन और टेन्योर से चीजें हों। उस समय कुछ सेलफोन्स नहीं थे, एंड आप कह सकते हैं कि हर पड़ाव पे, हर पर्सपेक्टिव पे चीजें होती है, तो हमें आंसर में वो लिखना है जो मतलब कि उसकी स्पिरिट और फील को लेके आए। तो दैट इज हाउ इट इज। एंड शाह कमीशन में जब बात की गई दैट हाउ मिसयूज ऑफ पावर वाज देयर ड्यूरिंग इमरजेंसी बाय पीपल लाइक संजय गांधी और इवन बंसी लाल और इवन विद्याचरण शुक्ला एंड धीरेन्द्र ब्रह्मचारी, अ योगा गुरु, जो कि who was known as Mrs. Gandhi's yoga teacher and had a considerable influence in the Congress government. So that is how it is, there are different perspectives. तो हर समय ऐसा कुछ होता है, लेकिन like in these times, new generation must be more aware, must be more powerful, must in terms of understanding how proper functioning can only lead us to a more dignified life. Parag Jain, an IPS officer, he is, Parag Jain is appointed as new Chief of Research and Analysis Wing from July 1 onwards, 1989 batch IPS officer. And he was serving as the head of Aviation Research Center, the technical wing of RAW. Very important, quiet, methodical style, preference for staying away from limelight. And from last 1 decade, he held several crucial overseas and domestic assignments. He was India Station Chief in Sri Lanka during the time period when the regime was changing over there. Similarly, in the context of, you can say, other developments, but then
Now the role is to see what is happening in Bangladesh, what is happening in Pakistan, what is happening in China, and आगे का आप कैसे देखेंगे, आगे का आपको देखना है कि कैसे देखेंगे. इन पंजाब ही सर्व्ड एज एसएसपी चंडीगढ़, डीआईजी लुधियाना, and Mohammad Mustafa, 95-85 batch IPS officer who has worked with Jan, said Parag is a good officer and a thorough gentleman, hard-working, hands-on and professional officer. Jan's experience in both operational and technical intelligence, along with his stints in sensitive geopolitical theaters, is seen as an asset as he takes charge of agency at a time of heightened strategic challenges. तो जैसा मैंने बोला उस पर्सपेक्टिव से देखना है. बाकी आप सोच सकते हैं कि इंस्पिरेशनल फिगर्स में आप बिना नाम लिखे लिख सकते हैं कि क्या वैल्यू चाहिए. दैट्स ऑल इट इज. जीएसटी लॉज हैव एडेड टू द बर्डन ऑफ बिजनेस. हम पूरी तरह से ऐसा नहीं मानते. High and multiple rates of GST per se are bad. Rules and regulation notifications, compliances under GST are worse. Together with the manner in which the laws are interpreted and applied by income tax, customs, GFT and GST department is a nightmare. CBI, ED, DRI, GST, SFIO seem to regard every businessman as suspect. अब ये बात कही जा रही, तो आप इसको कैसे डिनाई करेंगे, कैसे आप इसको पर्सपेक्टिव से चेंज करके लिखेंगे? यही मेंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इस एग्जामिनेशन का पर्सपेक्टिव है. सो वी हैव टू राइट हाउ एमएसपी, पीएम किसान, पीएम फसल बीमा योजना या केसीसी, किसान क्रेडिट कार्ड, ई नाम, फूड पार्क्स जो भी है, उनसे एफिशिएंसी कैसे बढ़ी है, उनसे प्रोडक्टिविटी कैसे बूस्ट हुई है, और यील्ड पर एकड़ हमारी वर्ल्ड क्लास नहीं है, ग्लोबल नहीं है. हम अर्जेंटीना, हम यूक्रेन लड़ाई के बावजूद, और हम रशिया से भी 50-50 साल एक तरीके से पीछे हैं कई चीजों में. तो हाउ वी विल डू दैट? देन दैट्स व्हाट यू हैव टू डू. सो व्हाट इज द मैट्रिक ऑफ डिबेट? सो फार्म प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ा है, फार्मर का जो हम बात करते हैं इनकम, आय हमने दुगनी कर दी, तो क्या ऐसा कुछ है? सो एजेंडा फॉर डीरेगुलेशन टू रिड्यूस कंप्लायंस बर्डन्स. सो गवर्नमेंट हैज बीन लुकिंग इनटू इट. गवर्नमेंट हैज बीन ट्राइंग. जीएसटी के इतने फ्रॉड भी हुए हैं, लाखों करोड़ों रुपए का फ्रॉड हो गया है, वो भी बचाना है. रॉन्ग सरकार से जो है आपने रिफंड लिए हैं. तो वही बात है कि स्किलिंग प्रोग्राम, पीएम इंटर्नशिप प्रोग्राम की हम बात कर सकते हैं. एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट्स में हमने देखा कि क्या पॉजिटिव चीजें. तो आपको rather than going with the article just what it is saying, we have to see, we have to see how we can really understand in the context of not just domestic, मैं तो कहूंगा, जबकि मैं कहूंगा कि मतलब जियो स्ट्रेटेजिक कॉन्टेक्स्ट में भी हम कहेंगे. जैसे फॉर एग्जांपल अभी एक नया डेवलपमेंट है दैट वो नेशन जो रशिया के साथ ट्रेड करते हैं उनके ऊपर हम 500% टैरिफ लगा देगा यूएस. प्रेशर लाइक कंट्रीज लाइक इंडिया एंड चाइना, ताकि वो रशिया के साथ ऑयल या बाकी गुड्स पे कुछ कर ही नहीं कर पाए, ताकि उसकी वॉर इकोनॉमी जो है वो वीक हो सके. सो देयर आर डिफरेंट फैक्टर्स. सो फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, तो वही बात है कि हमने उसके लिए हम उसके लिए एम्प्लॉयमेंट, हम उसके लिए बाकी फैक्टर्स की बात करते हैं, और बाकी सारे एस्पेक्ट्स हैं. हाउ फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी विल टेक प्लेस, वो आप 4 पॉइंट मुझे लिख के दीजिए कि these are what I believe the formulation of economy can take place. Now NHAI's new traffic system on Dwarka e-way is a kind of a model again for urban governance, again for क्योंकि हमने urban governance पे एक क्वेश्चन डिस्कस किया था. और दूसरा ये है, ये आपका इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है, ये आपका एथिक्स में भी आ जाएगा कि कैसे आप फैटिलिटीज को कम करने के लिए स्पीड को जैसे बैंड व्हीकल्स जो है वो नहीं चलने चाहिए, सीट बेल्ट वायलेशंस है, ओवर स्पीडिंग है, हेलमेट वायलेशंस है. सो मोर देन 3.68 लाख व्हीकल जो है काउंट है, और 80,000 के आसपास ट्रैफिक वायलेशंस है. सो दैट इज ओनली वी आर टॉकिंग. सो फॉर एग्जांपल से जून 21 टू जून 23. तो ये एक एग्जांपल है. वी आर मूविंग फॉरवर्ड विद अ बिग कंट्री, बिग पॉपुलेशन, ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटीज, नेवर एंडिंग प्रॉब्लम्स. तो उस पर्सपेक्टिव से आपको मोटिवेटेड होकर देखना पड़ेगा. RBI study produces daily financial condition index to track market trends. एक एग्जांपल है. So it is saying that financial conditions जो इंडेक्स है FCI for India with daily frequency. So कैसे होगा? Composite indicator of money market, government securities, corporate bonds, equities and the foreign exchange market. It will be offering insight in the broader financial environment. आपको डेली ट्रैक करोगे तो यू आर नॉट गोइंग टू मिस एनी क्यूज. आपको ट्रेंड पता चलेगा, और डिसीजन मेकिंग में भी आपको पॉइंट हो सकता है. तो इट्स अ काइंड ऑफ अ गॉज
जैसा की बात है। सो आप कैपिटल मार्केट की मेच्योरिटी के पर्सपेक्टिव से इसको देख सकते हैं, और कंडीशंस जो है वो तो अब वॉलेटाइल हैं ही, लेकिन फिर भी जो इकोनॉमी रिजिलियंट है, जो इकोनॉमी के फंडामेंटल रिजिलियंट हैं, जहां पर बबल नहीं है, दैट इज गोइंग टू वर्क एंड दैट इज गोइंग टू मूव फॉरवर्ड। फॉर एग्जांपल हम बात करें इंडिया की नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के लिए, आरबीआई ने भी कुछ टाइम पहले हमने बात की थी, इट हैज कम अप विद सर्टेन काइंड ऑफ मेजर रिफॉर्म्स। इट हैड ऑर्डर कि ऐसे होगा, गोल्ड लोन की हमने बात की थी। So from that perspective, you have to see that there are different areas which one is working upon. India's traditional textiles could hold key to sustainability. बात तो सही है, लेकिन फिर वही बात है कि इंडिया के जो टेक्सटाइल पार्क हैं, इंडिया के जो वो तो एक तरफ से आपके मॉडर्निटी दे आर रिफ्लेक्टिंग अपॉन द ट्रेडिशनल सिस्टम, कैसे वायबल है। इंडिया इज द सिक्स लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ टेक्सटाइल अप्रैल, एंड इट इज अकाउंटिंग फॉर 8.2% ऑफ merchandise export, enjoying employing over 4.5 crore people. So 4.5 crore people it is it is employing, ये तो फैक्ट हमें याद ही होना चाहिए, लेकिन फिर भी क्या ये काफी है? काफी तो नहीं है। सो पॉइंट वही है कि एप्पल सेक्टर इज ग्रोइंग बाय 15%, ई कॉमर्स है, फैशन साइकिल्स है, एंड फास्ट फैशन इज इंडस्ट्रियल स्केल के ऊपर हो रहा है। सो द पॉइंट इज दैट हाउ ट्रेडिशनल सिस्टम कैन बी मोर वायबल, कैन बी मोर चीपर, कैन बी मोर सस्टेनेबल, कैन बी मोर एनवायरमेंट फ्रेंडली। सो ब्लॉक प्रिंट्स, वुड वर्क्स, सो दिस इज देयर। जैसे अभी हमने उत्तराखंड की बात की, तो वो लेकिन उसको लेके कैसे जाओगे आप? उसमें चैन कहाँ से आएगा? मार्केट कैसे आप घुमाओगे? क्योंकि उसको आप लग्जरियस कैसे बनाओगे? बिकॉज द क्वेश्चन इज दैट जो लग्जरी कंजम्पशन है, दैट इज द मेन प्रॉब्लम। लोकल सोर्सिंग, ड्यूरेबल मटेरियल, लो वेस्ट हैबिट्स, ये तो चीजें फिर आपका महंगा है। आप तमाशा कैसे करोगे? हाउ यू विल डू तमाशा? इट इज अ काइंड ऑफ डिफरेंट लाइफस्टाइल व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट। तो कांथा स्टिचिंग का एग्जांपल दिया, चिंदी रग्स का एग्जांपल दिया, पर कौन चिंदी चाहता है? सब चाहते हैं हमारे यहाँ तो ईरानियन रग्स हो पूरे। For example, another example is here, Godhadi. Example is there, the dhotis and old sarees. So this is very, very important. So this is very important, and this has to be mainstream. So this requires a lot of effort. जैसे खादी के लिए है, but then we can write in essay, ethics, and also in general studies paper 1 और 3 के perspective में हम लिख सकते हैं. So monsoon session of parliament is going to see heavy economic agenda. So new income tax bill, and then government may also introduce amendments to the Companies Act 2013. उसमें details हम देखेंगे. MCA has, Ministry of Corporate has proposed widening fast track mergers to ease the business process. We also see that. So these are couple of ideas. जब आप पेपर 2 को लिखते हैं कि पार्लियामेंट आखिर करती क्या है, पार्लियामेंट आखिर बैकग्राउंड में तो 24/7 राउंड द क्लॉक ईयर में पूरा काम चल रहा है। इट इज नॉट दैट सडनली द member of parliament and the ministers are meeting and suddenly parliament starts. Parliament is functioning around the year. So the insurance amendment bill that seeks to allow 100% FDI and composite licensing and a clutch of amendments like insolvency and bankruptcy code की जो हम बात कर रहे हैं, तो मेंस में आएगा। They will be providing a kind of a question, and then 150 words हमें लिखना पड़ेगा कि how it is going to help India. For example, आप कह सकते हैं कि the requirement of net owned funds for foreign reinsurers, उसको बढ़ाने की, उसको रिड्यूस करने की बात है। रिड्यूस फ्रॉम 5,000 करोड़ टू 1,000 करोड़, उससे फर्क पड़ेगा, उससे अफोर्डेबिलिटी आती है, उससे ज्यादा प्लेयर्स आ पाएंगे। द इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी विल बी empowered to specify lower entry capital, not less than 50 crores for underserved or unserved segments, case to case basis पे। Micro insurance firms are likely to get benefit. So this is very important. These are very, very important for the mains examination. और हमें जैसे IBC के amendments की बात कर रहे हैं, तो ये दोबारा आएगा, it will be coming up when the monsoon session starts. But हम we must be up to such level where we are able to we are able to visualize that yes, this is going to happen. Centenary celebrations of a spiritual leader. So India is the most ancient living civilization in the world. This is very true in that sense. So Prime Minister Narendra Modi with Rashtra Sant Param Paracharya Shri 108 Pragya Sagar Ji Muniraj during the centenary celebration of Jain spiritual leader Acharya Vidyanand Ji Maharaj. So this is very, very important, revered. So we know Jain ethics, sense of service. We know their non-violent ways. We know their क्या कहना चाहिए मुझे कि महावीर, जो तीर्थंकर जैन महावीर थे, उनकी टीचिंग्स की जहां तक बात है। बट देन डिफरेंट फील्ड्स की अगर हम बात करें, तो आज की डेट में पानी है, बिजली है, हेल्थ है, गवर्नमेंट का जो पर्सपेक्टिव है उस पर्सपेक्टिव से उन्होंने कहा। एंड देन
about national integrity and so forth. So these are some of the ideas. So Paramarth is one of the words. Ahimsa hai, Paramarth hai, and the idea that so the sense of service must reach the last person in social hierarchy. So when we are writing mains answers, जब हम स्वामी रामकृष्ण परमहंस की बात कर रहे हैं, जब हम किसी और सोचते तो हम ये पॉइंट्स वहां पर भी लेके आ सकते हैं. That's what we have to raise the bar. अनफेयर प्रैक्टिसेस फोर्स्ड इंडिया टू रिस्ट्रिक्ट ट्रेड. जूट की अगर हम बात करें बांग्लादेश की, बिकॉज वो सर्कमवेंटिंग हो रही है, पहली बात. तो दूसरा, बांग्लादेश इज डंपिंग इट्स जूट ओवर हेयर थ्रू लैंड रूट. बट देन हमारी जब बात आती है तो हम तो मतलब आवर नॉर्थ ईस्ट इकोनॉमी एंड ओवरऑल वी आर नॉट एबल टू डू द अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस आर देयर. सो मिसलेबलिंग के थ्रू टेक्निकल एग्जम्पशंस ले ली, लेकिन एक्चुअल में एग्जाम नहीं होना चाहिए. सो बांग्लादेश जूट एक्सपोर्ट बेनिफिट फ्रॉम स्टेट सब्सिडीज, जो स्टेट्स उन्हें देते हैं. तो जूट इंडस्ट्री has suffered due to adverse impact of dumped subsidized import from Bangladesh. So new restrictions are going to be there, and only Nehwa Sheva seaport in Maharashtra will be allowed, and the purity measures they were there and they came back. So अभी नेपाल के थ्रू, भूटान के थ्रू, किसी के थ्रू भी आप नहीं भेज सकते. So under the provisions of SAFTA, South Asian Free Trade Regime, jute from Bangladesh enjoys a duty free access to India. लेकिन जूट इसकी वजह से इंडियन जूट इंडस्ट्री ने इतना सफर किया है लॉन्ग टर्म में, देन there is no point. So jute exports continue to benefit from state subsidies, as I just said. So इसीलिए DGFT ने बोला कि भाई एंटी डंपिंग जो हो रही है, एंटी डंपिंग मेजर्स हमें लेने पड़ेंगे डंपिंग के अगेंस्ट, और डिटेल इन्वेस्टिगेशन उन्होंने किया, तो इसलिए उन्होंने एंटी डंपिंग ड्यूटी इम्पोज की, यानी कि अब वो डंप नहीं कर सकते, उसको इतना महंगा कर दिया कि वो डंप करने में भी उन्हें महंगा पड़ेगा. सो these are some of the ideas. साइबर सिक्योरिटी एज डिफॉल्ट सेटिंग, ऑब्वियसली हम बार बार बात करते हैं, बट द क्वेश्चन इज question is that Google is taking an initiative. For example, cyber security as default setting, if it is there, then it is going to help. But then the question is, we are already working on tactical measures. We are already working in tactical measures, means अब IC4 है, I4C, I mean to see आपका. फिर उसके बाद there are state government initiatives, there are there are digital awareness, RBI is also putting up. But then it is very, very important that we have to be much more aware, and the challenge is that the digital infrastructure hai hamara, that is very, very amazing and a very high profile, and because of the same thing, digital frauds have become more easier. So phishing या फिर जो डिजिटल अरेस्ट, ऐसे जो चीजें हैं, this is very, very important, because scams are distributed on telegrams or WhatsApp, और आप कह सकते हो कि वो ब्रांड लैंग्वेज में होते हैं. सो गूगल जो है, गूगल इट इज एन एग्जांपल ओवर हियर, हम उसे भी लिख सकते हैं. तो जैसे फॉर एग्जांपल एयरटेल इंट्रोड्यूस्ड नेटवर्क वाइड AI फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम. So the phone number, if it is coming, it will already say it is spam, and even it is also tried to stop any kind of fraud thing what it is facing. So initiative is working, but then attackers are also becoming more and more sophisticated. They are also moving ahead. So हमें उस पर्सपेक्टिव से देखना होगा. तो हमें जो है इसके लिए बिल्कुल डेडिकेटेड होकर करना होगा. टेक्निकल एस्पेक्ट इज वन एस्पेक्ट एंड ऑपरेशनल एस्पेक्ट इज वन एस्पेक्ट. दोनों को जब मिलाएंगे तब बात होगी, बिकॉज Indian entities could lose up to 20,000 crore to cyber crimes. 20,000 crores. So this itself should be motivating you. Why I want to become civil servant? I want to work for this thing. I want to work on the through government platform for this thing. I want to utilize my my expertise, या मैं चाहता हूं मैं उसको करूं. तो आपके लिए तो बहुत मोटिवेटिंग हो सकता है. A new telescope quickly spots 2,100 asteroids. So this is an example for PT, the Vera C. Rubin Observatory. So uncover million more, even planet number 9. So that is what more than million asteroids, some of them potential threats to Earth. That is what they could be seen. So these discoveries were made by Vera C. Rubin Observatory in Chile. So आप कह सकते हैं कि this is very, very important, and आप ये भी कह सकते हैं कि प्लानिटरी जो अंडरस्टैंडिंग है, यूनिवर्स की जो अंडरस्टैंडिंग उसके पर्सपेक्टिव से. सो दिस इज फ्रॉम द पर्सपेक्टिव दैट हाउ जबकि सारे एस्ट्रॉइड्स, नन ऑफ द एस्ट्रॉइड्स आर कमिंग नियर टू द अर्थ, बट द पॉइंट इज दैट हाउ whole universe is there, and how these bodies are very, very important, and
आप कह सकते हैं दैट कैसे, व्हाट आर दोज प्रोजेक्शंस जिसमें एस्टेरॉइड्स आते हैं, मीटेरॉइड्स आते हैं. तो दिस इज व्हाट कम्स इन द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, because prelims is very tough. It is very smart exam, and we have to work in that direction smartly. That is what we are doing 24/7 round the clock throughout the year. Different approaches को हम follow कर रहे हैं, and we will continue to do so as to make sure that we get success through hard work, diligence, and our structured approach. Thank you very much for joining courses, programs, and being part of Unsarkari. Thank you very much.